सभी को नमस्ते। हाँ जी सर, कुछ बोल रहे थे सर? सर आपने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं ना, वो मेरे को आवाज आई थी, है ना? अच्छा 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 अच्छा। वो हमारे शायद प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे, है ना? चलिए कोई नहीं, अच्छा आ रहे हैं सब लोग, बस 5 मिनट लगेगा राहुल सर, है ना? ठीक है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। ओके ओके, वेलकम, थैंक यू। सर नमस्ते, बस 5 मिनट सर, क्योंकि लोग आ रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? ठीक है सर। हाँ, एज यू विश, जैसे। हाँ 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 हाँ, जैसे ही आएंगे हम, हाँ हम शुरू कर एडवांस। देंगे सर, है ना? हाँ हाँ जी सर। जादव जी, मेरा कैमरा नहीं मिल हाँ रहा है इस पे, नमस्ते मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। तो ये बोल रहा है कैमरा सिस्टम है, तो मैं एक बार फोन से ज्वाइन करती हूँ। जी आराम से मैम, अभी 5-7 मिनट लगेंगे अभी, क्योंकि अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है है ना? मैं एक ओके बार ओके मैम। रीजॉइन करने की कोशिश करती हूँ। जी जी, ओके 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 मैम। Hello. Hello, good evening everyone. Good evening. Hello, welcome, ma'am. Thank you. We are just waiting for more participants to join. Yes, We'll be beginning yes, shortly. yes. Once everybody joins. Yeah. Hello, Rahul. sir Bimalda, sir pranam sir. Good evening, everyone. Good evening Miss Good Bimalda. evening, ma'am. Sir, how are you? Bimalda, how are you?
John. हेलो हेलो भावना भाई सर Hello, sir. Please wait a little while. We'll be beginning at 7:10.
Hello, how are all of you? Hello, sir. Hello, Rahul ji, कैसे हैं आप? Yeah, I'm fine, sir. I'm very fine, sir. Thank you for inviting me. It's such a pleasure to be talking to all of you. Yeah, sir. We are deeply honored to have us with you. Oh, my pleasure, sir, my pleasure. All right. So before I begin, I would like to say a few lines by Maya Angelou. Uh, you may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dirt, I'll rise. So, with these inspiring words, I welcome you all in this international webinar in lieu of Yoga and Olympic Week celebration. Today, we celebrate resilience, strength through the medium of yoga, arm wrestling, and the Olympic spirit. So, we have brought together accomplished athletes, experts, and coaches to share their personal stories, insights, and training methodologies. Before we begin, few rules to be kept in mind by the participants. Participants can ask their queries in the chat box. The speakers will try to answer after each of their sessions. Um, and please do not unmute yourself and disturb the meeting during the presentations. And the most important one, certificates for participation will be given to those participants who will be willing to attend the meeting until the end. Now, for welcoming remarks, I would like to welcome Ms. Preeti Jhangiani. Ma'am, please, the stage is yours. Hello to everyone, and a very warm welcome to everybody here. And this is such a wonderful thing that we are here for today, for exploring the synergy between yoga, arm wrestling, and all other Olympic sports. I think it's a wonderful event, and thank you to everyone for inviting me and allowing me to give the opening remarks. This is something I think we have just finished our International Yoga Day. And now this is the International Olympic Day and Yoga Day Week special. And I'd like to thank the KA College, Kasganj, and also people here from the Pro PANJA League and PAFI, everybody here from PAFI, People's Arm Wrestling Federation of India. Today, arm wrestling has become suddenly a huge craze, and we all are very excited with the progress that arm wrestling has taken today. And we at PAFI hope to take arm wrestling to greater heights, even internationally. I can tell everybody one thing: the eyes of the world today are on India, because they are all very, very excited with the progress that arm wrestling has taken in India. Our national channel, Sony Sports, is now going to show arm wrestling. And it's taken a whole production to a whole new level, arm wrestling production and the events of arm wrestling to a whole new level. So I welcome all of you once again. And thank you very much once again for inviting me here. It's going to be a very exciting session. Thank you, ma'am, for your remarks. Next, we have Mr. Lakshman Bhandari. He is the arm wrestling coach and motivator, and also the founder of Royal Sports Club, Asian and National Arm Wrestling. He is a gold medalist and champion of champions, and he's also the part of People's Arm Wrestling Federation India. Sir, please enlighten us about what arm wrestling is. He's going to make us understand what exactly is the sport of arm wrestling is. Yeah, thank you so Lakshman, much. sir. Thank you so much. Thank you all the valuable members here attending, and I really congratulate K College for hosting this wonderful webinar. And really, it's required at this moment कि yoga, और we are just internationally yoga day को हम लोग celebrate कर रहे हैं worldwide. जिस तरह से हमारा इंडिया का योगा जो है, इंडिया का हमारा क्रिएटिव है ये योगा, और पूरे वर्ल्ड में हमारा ये गया है. और ऐसे ही मैं आर्म रेसलिंग के बारे में भी आपको बोलना चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग भी हमारा प्योरली इंडिया गेम है.
और थैंक टू प्रीति जी एंड प्रवीण भाई की उन्होंने अभी ये प्रो पंजा लीग में एक टाइटल दिया है कि आर्म रेसलिंग भारत का खेल। तो ये एक चीज दिखाता है कि आर्म रेसलिंग किस उस पे है। तो मैं अभी थोड़ा सा एक आपको आर्म रेसलिंग के बारे में एक ब्रीफली कहूँगा, बताना चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग इज द गेम ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। क्योंकि मैं इसको बॉडी माइंड एंड सोल का इसलिए करता हूँ और इस रियली वेल कनेक्टेड विद द योगा। जो लोग योगा करते हैं और जो लोग आर्म रेसलिंग करते हैं, जो कंबाइन करते हैं, वो इसकी वैल्यूज को समझते हैं। क्योंकि आर्म रेसलिंग में भी ब्रीदिंग पावर का एक बहुत जबरदस्त हमारी टेक्निक होती है जिसको हम लोग रेसलिंग में यूज करते हैं। और उस टेक्निक को योगा के थ्रू आप इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी स्किल्स को बहुत डेवलप करता है। योगा आपके मसल्स को रिलैक्स करने में और आपको स्ट्रेंथन करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बेसिकली आर्म रेसलिंग जो है हमारा 1977 में हमारा स्टार्ट हुआ था, और जिसमें कि जो फाउंडर थे आर्म रेसलिंग, क्योंकि आर्म रेसलिंग ने आपने देखा होगा कि हर कोई गेम खेल रहा, कोई भी शायद घर ऐसा नहीं होगा, कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा या किसी भी एज ग्रुप में जिन्होंने फ्रेंडली ऑफिस में, घर में, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जिम, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस कहीं पर पंजा ना लगाया हो। लेकिन एक इसको यूनिफॉर्मल एक स्पोर्ट्स की लुक देने के लिए 1977 में जो 3 कंट्री थी हमारी इंडिया में, मिस्टर भरत बरनदास जी, बबो लेरी जी और कनाडा में, तो इस तरह की 3 कंट्रियों ने इसको इनिशिएट किया और उसमें इंडिया इस पार्ट था इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए और इस गेम को आगे बढ़ाते गए। और आज की डेट में लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज में आर्म रेसलिंग खेला जाता है। और इंडिया में भी आपको बताऊं कि लगभग हर स्टेट में, जितनी भी हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उसमें आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स होता है और एक वेल ऑर्गेनाइज गेम रहता है ये, और जिसमें कि इसको आगे कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो हमारी फेडरेशन है, जैसे हमारी इंडिया में फेडरेशन है, तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल फेडरेशन भी हैं, तो जिसमें एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, और जो एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में एफिलिएटेड होते हैं उनको वर्ल्ड फेडरेशन उसको मान्यता देता है। इट्स अ रूल। तो इसलिए जो भी चीज जाती है वो इंटरनेशनल और नेशनल में, एशिया एंड वर्ल्ड में जो एफिलिएटेड होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं इंडिया में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप में बच्चों को ले जाने के लिए। एज द अदर स्पोर्ट्स, आर्म रेसलिंग में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल पे भी चैंपियनशिप्स होती हैं। उसके बाद एक हायरार्की होती है कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल पे टूर्नामेंट कराना है, फिर आप स्टेट में जाते हैं जो विनर्स होते हैं, फिर उसके जो स्टेट के विनर्स हैं जो नेशनल में जाते हैं, नेशनल के विनर फिर एशियन, वर्ल्ड को और बाकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स उनके क्लब, जिम, स्कूल्स, कॉलेजेस इसमें हैं। और बेस्ट पार्ट है कि आज की डेट में अगर मैं पीछे कई सालों का अभी रिकॉर्ड देखूं या रिसेंटली वो देखूं, तो कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका क्रेज बढ़ा है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अगर मैं बात करूं तो जो आईपी यूनिवर्सिटीज है उसमें हमने बहुत सालों तक आर्म रेसलिंग का वो किया है। और लेकिन बिकॉज ऑफ बीच में ओलंपिक का एक इशू आया था कि जो ओलंपिक गेम्स होंगी वही यूनिवर्सिटी गेम में आनी चाहिए, तो वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम है, उसमें आर्म रेसलिंग को इंक्लूड किया जा रहा है। ऐसे ही हमारी जो इंडियन जो कमेटी से AIU है उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर भी आर्म रेसलिंग को हमारा इंक्लूड किया जाए। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि जैसे यूनिवर्सिटीज में जो मैं यहाँ ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में जो PhD जो लोग करते हैं बच्चे, उसको एक आर्म रेसलिंग को एक उस पर ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं और सब्जेक्ट को इसको ले सकते हैं जिसमें PhD कर सकते हैं। ये आर्म रेसलिंग एक बहुत ही डीप और रिसर्च का जो है ना स्पोर्ट्स है, जिसमें टेक्निकली हेल्थ से रिलेटेड शायद ही क्योंकि मैं खुद खेलता भी हूँ और कोच भी हूँ, तो मुझे इसकी टेक्निकलीज मालूम है कि कोई भी शायद बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं होता जो कि आर्म रेसलिंग में इंक्लूड नहीं होता, चाहे वो आपके एक्सटर्नल बॉडी हो या इंटरनल बॉडी हो। उसके अंदर हर पार्ट आपका लिगामेंट से लेकर, आपके हेड से लेकर, फिंगर से लेकर, फुट से लेकर और आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको लेकर आपका पूरा ये गेम कनेक्टेड होता है। तो क्योंकि आपने अपनी बॉडी के साथ खेलते हैं, सेल्फ इसके अंदर आपका जितना गेम का जो आपने स्ट्रेंथ पावर लगानी होती है वो अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्टेमिना के हिसाब से आपको लगानी होती है। ऑफकोर्स पावर का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो टेक्निक, पावर और स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हमें जो है इसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। इसके लिए जो रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा डीप इसके अंदर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जो इसमें कर सकते हैं। जो कि जो प्रॉब्लम और सब्जेक्ट का एक PhD के अंदर एक वो रहता है कि आपको वो सब चाहिए, तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसे बच्चे अगर PhD करना चाहें तो डेफिनेटली PAFI उसमें बहुत उनको हेल्प करेगा उन सब्जेक्ट्स को और उन जो प्रॉब्लम्स को करने में और उनकी रिसर्च को मदद करने में।
और मैं रियली इसको प्रदीप जादौन जी का भी इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अपने जादौन जी ने भी इसमें काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिसर्च वर्क किया है, कुछ इन्होंने लिखा भी है उसके लिए। तो रियली जो इनिशिएटिव प्रवीण जादौन जी ने किया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी पैफी की तरफ से। और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह की और इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे स्टूडेंट्स की तरफ से, या जो पीएचडी कर रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तरफ, तो ये बहुत अमेजिंग रहेगा। और आज की डेट में जिस हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल भी दूं आपको मैं, कि जो प्रो पंजा लीग है हमारा, जिसमें प्रवीण जी और प्रीति जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसकी वजह से भी गेम के अंदर जो बूम आया है, जिस हिसाब से किड्स में और हर एक लेवल पे जो आगे गेम बढ़ रही है, हमारी जिस लेवल पे बढ़ रही है, वो रियली रिमार्केबल है। और जो हमारा पैफी का एक टारगेट है कि पैफी में जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया लीडर बने। जैसे योगा में एक लीड कर रहा है, तो ऐसे ही आर्म रेसलिंग में भी एक लीडर के भूमिका जो है इंडिया उसमें करे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इसके अंदर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग, जैसे चैंपियनशिप हमारी स्टेट यूनिट्स हैं जितनी भी होती हैं, तो हम लोग स्टेट यूनिट्स में जो है कोशिश करते हैं कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस को ज़्यादा टारगेट करें, ताकि वहाँ पर गेम प्रमोट की जाए। और मोस्टली अभी एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो हमारी ऑल इंडिया पुलिस गेम है, उसके अंदर आर्म रेसलिंग को इंक्लूड किया गया है। और आगे भी जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आएंगी, उसमें आप देखेंगे कि जो आर्म रेसलिंग के जो एथलीट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर उनको मिल रही है, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एज अ कोच, एज अ रेफरी, एज अ एथलीट, और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर्म रेसलिंग की ओपन हो रही हैं। और मैं भी कई न्यूज पेपर में देखता हूँ कि यूपी में भी, यूपी गवर्नमेंट में भी आर्म रेसलिंग को एज अ स्पोर्ट्स कोटे में लिया जाता है। हेलो, जहाँ पर उन बच्चों को जो अचीवर्स हैं, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लगाते हैं, उनको एक मौका मिलता है उनको आगे करने में। तो आई एम श्योर कि एक बहुत बड़ा एक हमारा ये गेम चेंजर रहेगा आर्म रेसलिंग, और एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर्म रेसलिंग के अंदर है। और बेसिकली मैं तो चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि ये दिस इज अ बॉडी, माइंड एंड सोल का गेम है, इसलिए हर एक आदमी को एक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी केवल हेल्थ को ही, स्पोर्ट्स को नहीं देता, लेकिन आपकी हेल्थ को भी इनहेंस करता है, सपोर्ट करता है, मजबूत करता है। और आज की डेट में अगर हम आर्म रेसलिंग की बात करें, तो जितने भी बड़े सीनियर एथलीट्स हैं, आप देखेंगे आज भी फिट और फाइन वो होते हैं। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताऊं तो लगभग 70 to 75 ईयर्स के भी लोग आर्म रेसलिंग करने हमारे दिल्ली स्टेट में आते हैं। तो इससे पता लगता है कि कितना उनके अंदर फायर है, और कितना वो अपने उसको उस स्ट्रेंथ को करने में मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ मैं जरूर इसमें करना चाहूँगा। और अगर आप लोग को किसी के क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ आप मुझे बताएं। और जनरली मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग को कभी भी बिना ट्रेनर के, बिना कोचिंग के नहीं करना चाहिए। इंजरीज, जैसे हर स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं, आर्म रेसलिंग में भी इंजरीज होती हैं। इसके पर्टिकुलर सेट एंगल्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशंस एंगल्स के हिसाब से आपको खेलना चाहिए, नहीं तो इंजरीज होती हैं। हर स्पोर्ट्स में इंजरी है, तो इसमें भी इंजरीज से ये भी अछूता नहीं है, लेकिन इसमें इस तरह की इंजरीज नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से खेल रहे हैं, किसी के सुपरविजन गाइडेंस में खेल रहे हैं, आपके रेफरीज परफेक्ट है, उनको मालूम है कि एंगल्स कौन से होते हैं, किस एंगल पे रोकना चाहिए, किस एंगल पे फाइट करना चाहिए, तो डेफिनेटली एक सेफ गेम होती है, और उसमें आप सेफली आप खेल सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं उनको तो बहुत ध्यान से इसको खेलना चाहिए, क्योंकि ये गेम थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा एनर्जी का भी होता है। जब आदमी खेल रहा होता है, उसमें केवल एक जीतने का जुनून सवार होता है कि मुझे केवल जीतना है, उसी उसमें वो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, और एंगल गलत होते हैं तो मसल्स में स्ट्रेच आ जाता है, पेन आ जाता है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जरूर यहाँ पर ये जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी खेलें और उस पर जरूर खेलें, लेकिन मोटरसाइकिल या बाइक या रॉ टेबल्स और उस पर ना खेलें आप लोग, क्योंकि उसमें आपका एंगल्स बहुत गलत हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान नहीं रख पाते उसमें। तो एनी क्वेश्चंस प्लीज, आई वेलकम ऑल द क्वेश्चंस। If participants have any questions, they can ask in the chat box. और अगर किसी को ऐसे सवाल पूछना है, सर से बात करनी है, तो वो बात कर सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। Okay, I see there are no questions. Thank you very much for inviting me, and thank you everyone for listening me. I hope ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा. Really appreciate and congratulate all the organizers and team for hosting this excellent webinar. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir.
Next up, we have Dr. P. Rajni Kumar, who is an Associate Professor, Department of Exercise Physiology and Biomechanics, Tamil Nadu Physical Education and Sports University. He has done his MSc Biomechanics, MPS, and PhD, and he will be enlightening us upon the science of strength training. Sir, please welcome to the dais. Thank you so much. I'm very happy to be here to share some of my views on science of strength training on this day. Let me share the presentation. So the presentation is visible? Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, okay. So thank you for inviting me as a resource person to share on science of sports training. Wish you all a happy International Olympic Day, the 23rd June. So on 21st June, we celebrated International Yoga Day from India. And I would like to speak about science of strength training. So we used to see arm wrestling only in films. So now there is an association which is promoting it as a professional sport. So I should thank all the office bearers who are supporting this event. And whatever the event or whatever the training we do, we need to do warm up. So arm wrestling being an anaerobic sport, we could understand that more immense training on muscle build strength is required. And what is the science of warm up? So when we want to participate in any event, particularly the arm wrestling, we need to go for a warm up. What is the advantage of warm up? He is going to sit and do the arm wrestling. So what is the necessity for warm up? So warm up helps you to improve your temperature. That is core temperature, muscle temperature. So when the muscle temperature is increased, the normal human body is having 98.4 degree Fahrenheit. And when you do warm up, the body temperature goes up to 104 and 105 degrees Fahrenheit. So that is helpful for the body, the muscles to contract easier, so that the muscles can contract in a better way and exhibit the force. So when you need a power and force, the muscles has to contract optimally, and the temperature increases, and apart from that, the blood pressure goes up, and the blood circulation increases, the blood circulation to the muscles increases. So that's why we need to do warm up. So when you are at rest, right, the normal blood circulation is, for each beat, the heart pumps 80 ml of blood, 70 to 80 ml of blood. And when you are in any sports activity, it has to pump 110, 20 up to 30 ml for each and every beat of the heart. So to prepare the heart to pump more amount of blood to the muscles, we need to do warm up. So unless we do warm up, excuse me, sir. Your presentation slides are not changing. So can you see? Yeah, science of warm up. No, I can see the first slide, science of sports training. Okay. Yeah, now I can see science of warm up. Yes. Please continue. I think there is a latency. Yeah. Just a minute. Sure. Yeah, can you see? Yes, sir. I can see science of. Yeah, science of warm up. So one is temperature, another one is increase of blood pressure, and the third one is increase in the blood circulation.
So during rest, your heart is able to pump only 70 to 80 ml of blood per stroke or beat. And when you are warmed up and you are going for competition, it should pump the blood up to 120 ml to 130 ml. So we need to prepare the heart, make sure the heart is able to pump that much amount of blood for any event. And the fourth one is when your body temperature increases, the communication is happening through your brain, the nerves. How fast the brain communicates to the muscles. The nerve conduction velocity or the message which is being transmitted from the brain to the muscles are faster. Your body is warmed up and the temperature is up. So that's how you can make easy decisions and the muscles will be able to generate more force. So that's how we need to do warm up. For any sport, we need to do warm up. For arm wrestling is not an exemption. And apart from this is the basic everyone forgets. So that's why I would like to just, even most of the people may know, but I would like to share some fine information regarding this. So as I already told you, it is an anaerobic event. Anaerobic event means the body muscles are able to generate force in the absence of oxygen, which is extraordinarily more powerful, strenuous, exhaustive movement are happening during arm wrestling. So in this case, whenever your body is going for extraordinary or exhaustive effort of performing any event, there is a lactic acid buildup happens. So after the event is over, you do the warm up, you go for the competition or training, and after the event is over, we are supposed to go for cool down because we have to bring down the whole system into the normalcy. The reason why we bring down the whole system to the normalcy by doing small exercise, slow intensity exercise or low intensity exercise for 10 to 15 minutes is that once you bring the body to normalcy only, your body will be ready for the next bout of activity. So there is a huge buildup of lactic acid in the muscles. So the lactic acid can be sent back to the liver only when you go for proper cool down. Unless you do the cool down after the event is over, right? You may be happy that after the victory or after the event, okay, why should I do cool down? I feel normal, but your body is not ready for the next bout of activity. So that is what we need to understand. So cool down is very much essential. And properties of skeletal muscle. People used to see that whenever they go for building the muscles, they think that if I do stretching, right, I lose the property of the muscle, that the muscle build will be lost. It is not so. The basic science says that there are four important properties of a skeletal muscle. So one is contractility. Muscle will shorten for any stimulus. For an example, when you lift any weight, when you go for any movement, so muscle has to contract and shorten and exhibit the force. And second one is excitability. When the nerve conduction is there, the moment stimulus is given, the muscle fibers will excite. And the third one is extensibility. The extensibility is nothing but the muscle can stretch. You can pull the muscle and it can be stretched. So one property is that muscle can shorten from its normal length. Second one is it will respond to the stimulus. And third one is it can stretch. The fourth one is after the stretch, if you release it, again the muscle will come back to its normal length. So these are the four properties of the skeletal muscle. So nobody, right, need not, no one need to panic about, okay, if I do stretching exercise, I'll lose my strength, I'll lose my power. Okay, when you do stretching. Excuse me, sir. Yeah. Sorry to disturb you again, but the slide has not been changed. We Again? are still, yeah, we are still seeing signs of warm up here. Can you see now? No, sir. No, sir. And I'll, sorry. I think there is some technical glitch. Here I am having better bandwidth. I'm not sure why
Now I think you can see here. Yes, sir. Properties of skeletal Yeah, muscle. yeah. Yeah. So as I already told you, there are 4 properties of muscle. Always you think that you can do any sort of training, need not be panic whether you are a bodybuilder, the arm wrestler, right? When you build, because arm wrestlers normally go for power training to strengthen their arms, okay? And you need to go for proper warm up. I told you the science of warm up, and as well as the science of cool down. Now the science of skeletal muscles. Skeletal muscles are the muscles which are attached to the bones. So there are 4 properties as I already told you: contractility, excitability, extensibility, and elasticity. Fine. Okay. Now, can women do strength training? So people used to say, okay, this wrestling is only for male arm. So if you do any power training, obviously you will get masculinity and you will have bigger muscle size. It is not so. Women, when they go for power training or strength training, obviously they'll improve power, but they will not get the masculinity. The reason is that the hormone. Men, by naturally they have testosterone, okay, and women, they don't have testosterone, they have minimal testosterone. So the testosterone is the hormone which is responsible for creating the masculinity. So whenever women go for any power training, strength training, so they need not be panic. You can do weight training, power training, you can involve in arm wrestling, right? And you will not get that much big muscle, rather you will get improvement in strength as well as power. So this is one information I would like to share. And one more thing is that uh, whenever you do any warm up, whenever you practice any sport, right, the amount of blood which is supplied to the brain is around 750 ml per minute. So what is the use of it? Okay, so it's normally I could say that 5 liters is the quantity of the volume of blood in the body. When you do any warm up or any strenuous activity, so it goes up to 25 liters, 30 liters, 35 liters per minute. So that's how that faster the blood is being circulated to all part of the body, so that the muscles can contract. During this any exhaustive activity, 80% of the blood is being circulated to the skeletal muscles. Most of the blood is to the lower body. So when you want to bring back the muscles after the activity, you need to do cool down. Unless you do the cool down, so the blood will be pooled in the lower body. Again, sometimes people may feel giddiness, right, and uneasiness, tiredness after the activities over. So that is what. And during finally, what I would like to say is that um, when you want to be an arm wrestler, so you will be focusing on your arms. So when you do a training, it should be for the whole body, because it is like when you only build up your arm, okay, it is like strengthening only one branch of the tree, right, rather for neglecting the other parts. So there is a term called as kinetic chain. So kinetic chain means it is each and every joint muscles is connected. So when you do arm wrestling, ensure that you are concentrating your leg muscles, ankle, knee, hip, core, then shoulder, elbow, and wrist. So these are all the muscles which you are supposed to work on. There are 2 types of muscles, we say phasic muscle and tonic muscles. And when you are focusing on the anterior part, the front side of the part, so you have to work for the back side of the part also. For example, when you work, particularly the arm wrestlers, when I want to say, when you work for your biceps, you have to work for your triceps also. And these are all called as agonist and antagonist muscles. So you have to stretch the tonic muscles, which often become tight. So the people, right, they don't stretch the muscles. So as I already told you, fearing that if I stretch, I lose my strength, power. It is not so. If you do stretching, obviously you will improve your strength, because muscle elasticity is improved. Once the muscle elasticity is improved, automatically you will improve your power. So I have been given only 15 minutes of time.
So I hope I have covered, I mean, I consumed my amount of time. So without taking much amount of time, I am wishing you all a happy International Olympic Day and belated Yoga Day wishes. So thank you all, and I thank all the organizers for giving me an opportunity to share some of my science information to the fraternity who attended this session. So I invite you all to Tamil Nadu Sports University, which is located in Chennai. It is the biggest university exclusively for physical education and sports sciences. I welcome you all. Thank you for the opportunity. Thank you once again. Thank you so much, Dr. Rajni Kumar. If the participants have any questions, they can interact directly with the speaker or they can type their questions in the chat box. I see no queries have been raised. Thank you so much for your time, sir. And also thank you for addressing the disparity between the hormonal differences between men and women and muscle development. Thank you Big so much. thanks from Tamil Nadu Sports University. Thank you. Thank you. Before we move further, I would like to thank Bimal Kumar Chandra sir for his good wishes. And all right, now we move on, and our next speaker is Dr. Rajiv Chaudhary. He is a professor in physical education, Dean Students Welfare, and he has been awarded a Best Teacher Educator 2019 award from NCTE. His resume, if I must say, or his introduction is stellar. His track record is so neat, exactly, that I cannot summarize it in a few words. So instead of listening to me, I would request you all to please pay attention to him. He will be enlightening us on the topic of yoga for strength and endurance development. Dr. Chaudhary, the dais is yours. Thank you, madam. Thank you very much. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, thank you. Shri Praveen Dabas ji and Madam Preeti Jangiani from film industry, as well as owner and director of Pro PANJA League. Rajni Kumar ji, Professor Ashok Rostagi, Principal KA PG College Kasganj. Shri Lakshman Bhandari ji, my senior and my brother Praveen Jadon ji, and dear participants. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization. I am feeling great pleasure. My friend, please mute your mic. Hello, Gautam ji, please mute your mic. My senior, Ji sir. Dr. Praveen Jadon ji directed me to speak in both the languages, English as well as in Hindi. I will speak in both the languages. दोनों भाषाओं में बात करेंगे और उन्होंने मुझे केवल 15 मिनट आवंटित किए हैं. 15 मिनट में कुछ सार्थक बातें करने का प्रयास करेंगे. My topic is yoga for strength and endurance development. Ladies and gentlemen, we know that both strength and endurance as well as explosive strength is required in arm wrestling. So how yoga play a vital role in bringing the change in your strength as well as in endurance. I will speak in both simple words. सामान्य भाषा की बात करेंगे. I will speak in layman's language, जो कि एक आम समझ की भाषा हो. तो मैं अपने प्रस्तुतिकरण को आप सबके समक्ष शेयर करता हूं. Before that, I would like to share a Sanskrit slok that tells us about the significance of yoga. The Sanskrit slok is "Na tasya rogo na jara na mrityu praptasya yoga ganima shariram." Those who attain their body perfected through the fire of yoga does not have old age, illness or even death. हिंदी में हम कहेंगे, जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, ना उनको बुढ़ापा आता है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है.
लेकिन आज के दिन खेल के क्षेत्र में भी योग की उपयोगिता है। वी रिक्वायर मोटर कंपोनेंट्स, हमें गामक क्षमताएं चाहिए, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन। लेकिन आज जो हम बात करेंगे केवल हाउ टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड हाउ टू डेवलप एंड्योरेंस, और how yoga play a vital role in bringing the change in strength as well as endurance. Madam, is it visible on the full screen? Yes, sir, it's visible. Okay. As I have said, I will speak on the topic, on the title, Yoga for Strength and Endurance Development. मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं, विभिन्न भागों में इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभाजित किया गया। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, थोड़ा स्ट्रेंथ को समझ लें, लेमैन की लैंग्वेज में ताकत होती क्या है, एंड्योरेंस को समझ लें कि एंड्योरेंस क्या होती है। उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ योग, योग की अवधारणा, कि योग का वास्तव में क्या अर्थ है। Ladies and gentlemen, you will be agree with my statement. There is no standardization in the field of yoga. दुनिया भर के प्रगाढ़ विद्वान विदुषी समय समय पर पैदा हुए हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए। बट आई विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। चौथे भाग में बात करेंगे बॉडी माइंड कनेक्शंस। इन द फील्ड ऑफ योग वी डू योगिक प्रैक्टिसेस, दीज आर एसोसिएटेड विद द माइंड, लेकिन हम भ्रम में रहते हैं कि माइंड की एक्टिविटीज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। मस्तिष्क में कुछ भी घटित हुआ अनिवार्य रूप से शरीर को प्रभावित करेगा, शरीर में कुछ भी घटित होगा वो मस्तिष्क को अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा। आई विल प्रूव, मैं सिद्ध करूंगा विद एग्जांपल्स। अगले भाग में हम एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे। हमें ऊर्जा चाहिए, आर्म रेसलिंग में ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के सोर्सेज कौन कौन से हैं, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या एक भूमिका निभाते हैं, बात करेंगे। और अंतिम भाग में बात करूंगा मेटाबॉलिज्म एंड द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, एक संतुलन की अवस्था कैसे बनाई जाए जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हमारा प्रदर्शन अच्छा हो, केवल आर्म रेसलिंग में ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर खेल के क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं संक्षिप्त में स्ट्रेंथ परिभाषा से एक समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, मांसपेशियों की भार का प्रतिरोध करने की क्षमता ताकत कहलाती है, और ये ताकत विभिन्न प्रकार की होती है। एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एंड इन द फील्ड ऑफ आर्म रेसलिंग वी रिक्वायर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज वेल एज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। लेकिन साथ साथ क्योंकि वी हैव टू होल्ड ए पर्टिकुलर पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन को अधिक देर तक रखना होता है, उस दशा में वी रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ऑल्सो। तो मैं केवल दो ही गामक क्षमताओं पर मैं बल दे रहा हूं। आई विल स्ट्रेस ओनली ऑन टू मोटर क्वालिटीज, स्ट्रेंथ एज वेल एज एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ की बात हम कर चुके हैं कि मांसपेशियों की देर तक भार का प्रतिरोध करने की क्षमता, रेसिस्टेंस का प्रतिरोध करने की क्षमता। एंड्योरेंस की बात करते हैं। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, थकान को देर तक दूर रखने की क्षमता। आर्म रेसलिंग में प्रतियोगिता चल रही है, दोनों कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे के सामने हैं, बट दे हैव टू ओवरकम द रेसिस्टेंस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कि थकान को देर तक दूर रखना है, तभी उस पोजीशन को मेंटेन करके विजेता बन सकते हैं। तो दोनों ही स्ट्रेंथ एज वेल एज एंड्योरेंस बोथ आर रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ आर्म रेसलिंग, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ आर्म रेसलिंग, बट these qualities, these motor qualities are required in each and every sport. तो अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ योग, योग की क्या भूमिका ताकत के विकास में और सहन शक्ति, सहनशीलता के विकास में, स्ट्रेंथ के विकास में और एंड्योरेंस के विकास में योग की क्या भूमिका है। सबसे पहले इसके अर्थ से शुरू करते हैं कि योग का अर्थ क्या है। पहले बता चुका हूं, आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। पहली बात केवल करते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग को श्लोक के माध्यम से परिभाषित किया है। श्लोक आप सबके सामने है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। योग इज ए सिसेशन, सिसेशन मीन्स टू स्टॉप, किसको रोकना है, सिसेशन किसका, सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स। व्हाट डू यू मीन बाय थॉट वेव्स? थॉट वेव्स योग की भाषा में थॉट वेव्स और वृत्तिज, जो विचारों की लहरें उठती हैं, तो सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स is known as yoga. But since we all are curious by nature, the question may arise, from where these thought waves originates? इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? These thought waves originates from our mind stuff. The entirety of human mind is known as mind stuff. जो योग की भाषा में कहा गया चित्त, that is considered as a cosmic mind, noticeable everywhere.
दैट इज ऑल प्रिवेडिंग। तो कुल मिलाकर हम कहते हैं सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ इज नोन एज योग। तो बात हम माइंड की कर रहे हैं, हम सिसेशन कर रहे हैं थॉट वेव्स का जिनका ओरिजिन माइंड स्टफ से है। तो आर्म रेसलिंग के क्षेत्र में क्या उपयोग था? उत्तर में अभी तक तो केवल इतना ही, बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो आर्म रेसलिंग की एक्टिविटी है पूर्णतः ताकत पर निर्भर नहीं करती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर ऑल्सो, एक मेंटल कैपेसिटी ऑल्सो। तो हम बॉडी माइंड कनेक्शंस के बारे में संक्षिप्त में जान लें कि बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड, बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो बॉडी माइंड के कनेक्शंस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। वन इज ऑटोमेटिक, स्वचालित, हम चाहे रोकना रोक ही नहीं सकते, और दिशा दो हो सकती है। ऑटोमेटिक माइंड बॉडी फिनोमिना कि माइंड में कुछ हुआ बॉडी को प्रभावित किया, और दूसरा ऑटोमेटिक बॉडी माइंड फिनोमिना कि शरीर में कुछ घटित हुआ माइंड को प्रभावित किया, बट ऑटोमेटिकली दैट टेक्स प्लेस। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट वन इज डेलिब्रेटेड, स्वेच्छा से। आर्म रेसलिंग में आप अभ्यास करते हो, वी डू ऑल डेलिब्रेट एक्टिविटीज। तो योग के एक माइंड बॉडी कनेक्शंस भी डेलिब्रेट कनेक्शंस हैं कि डेलिब्रेटली हम कनेक्ट करते हैं बॉडी और माइंड को। डायरेक्शंस दोनों होंगी, डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी, ऑन द अदर हैंड डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड एक्सप्रेशंस। चारों को ही जान लें। लेट्स स्टार्ट अगेन, आई रिपीट, हम चारों की बात करेंगे। ऑटोमेटिक माइंड बॉडी फिनोमिना, ऑटोमेटिक बॉडी माइंड फिनोमिना, डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी एक्सप्रेशन एंड डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड एक्सप्रेशन। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक के बाद एक, जिससे हम जान लें। शुरू करते हैं ऑटोमेटिक माइंड बॉडी। समथिंग टेक्स प्लेस इन द माइंड दैट अफेक्ट आवर बॉडी। एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, सामने आपके एग्जांपल्स है। क्राइंग, इनिशिएशन, शुरुआत माइंड से होती है लेकिन हमारी बॉडी प्रभावित होती है, आंसू आएंगे, फेस एक्सप्रेशन चेंज होंगे। लाफिंग है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, इमोशंस हैं। एनी कॉग्निटिव एक्टिविटी, इनिशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड दैट अफेक्ट द बॉडी सिग्निफिकेंटली। एंड हाइपोकॉन्ड्रिया, आज के दिन रोग भ्रम, माइंड में एक बार भ्रम उत्पन्न हो जाए कि मैं इस रोग से पीड़ित हूं, यू विल फाइंड सेवरल रिसर्चेस, शरीर में वही रोग उत्पन्न होने लगता है। हाइपोकॉन्ड्रिया एक मेजर प्रॉब्लम। साइकोसोमेटिक डिजीज जितनी भी हैं, all these comes under the category of automatic mind body phenomena. If you are associated with the research, यदि अनुसंधान या शोध से जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसिबो इफेक्ट इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोमेटिक बॉडी माइंड फिनोमिना। दूसरे की बात करते हैं, ऑटोमेटिक बॉडी माइंड फिनोमिना। फिजिकल पेन, शरीर में दर्द होगा तो क्या माइंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? फिजिकल प्लेजर है, यदि शरीर को किसी भी रूप का हम आनंद ले रहे हैं तो हमारे माइंड रिफ्रेश नहीं होता क्या? होता है ना। एग्जाम्पल है, पेन की हीट है, कोल्ड है, इंटरनल पेन है, इंटरनल ऑर्गन पेन है, जॉइंट पेन है, दैट इफेक्ट आवर माइंड एसेंशियली। एंड फिजिकल प्लेजर, फूड, अच्छा भोजन खाएंगे माइंड फ्रेश रहता है। नहाते क्यों? आवर बॉडी टेक्स बाथ, स्नान करते हैं, दैट रिफ्रेशेस आवर माइंड आल्सो। कि बाथ का शरीर की सफाई नहीं करता केवल हमारा एक स्नान, वो हमारे मस्तिष्क को भी रिफ्रेश करता है। सेक्स इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट। डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी एक्सप्रेशन, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस में एक एक्टिंग हो सकता है, एक माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस में इमेजिनरी प्रैक्टिसेस हो सकती है, ऑटोजेनिक प्रैक्टिसेस हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, बायोफीडबैक हो सकता है। और जितने भी आर्म रेसलर्स हैं, इमेजरी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जो कि दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेलिब्रेट, और आप करते भी होंगे इमेजरी प्रैक्टिसेस विदाउट पार्टनर। एंड और मेडिटेशन भी एक बहुत इफेक्टिव टूल और प्रैक्टिस है। और एक्टिंग आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड एक्सप्रेशन। अब लास्ट चौथा कनेक्शन की बात करते हैं, डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड, कि शरीर से हम कुछ मेहनत करें, माइंड को प्रभावित करें। रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस, योग के क्षेत्र में प्राणायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज, आसनास, खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले, पेट के बल किए जाने वाले, पीठ के बल किए जाने वाले, सूर्य नमस्कार है, दुनिया भर के आसनास हैं, एक्सरसाइजेस हैं। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिलैक्सेशन पर्पसेस, कि we relax our body but that relaxes our mind also. So these are the examples. ये बात इसलिए की गई कि बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, बॉडी और माइंड को हम पृथक नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो एसेंशियली खिलाड़ी को दोनों प्रकार की गतिविधियां अपने अभ्यास सत्र में सम्मिलित करनी चाहिए। We should include the practices from both the categories,
like mental practices as well as bodily practices we should include essentially. अब बात करते हैं अगले भाग एनर्जी सोर्सेस। भाई कुल मिलाकर एक अच्छे आर्म रेसलर को या अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए हमें थकान को देर तक दूर रखना है। अब थकान को देर तक दूर रखने की प्रक्रिया है क्या? उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। शरीर में ऊर्जा है तो थकान को देर तक दूर रखेंगे, शरीर ऊर्जावान नहीं है तो हम थकान को देर तक दूर नहीं रख पाएंगे। तो व्हाट आर आवर एनर्जी सोर्सेज? लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फॉस्फोजिन सिस्टम। द एनर्जी सप्लाइड बाय एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट, और उसके बाद ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम ऊर्जा प्रदान करना शुरू करता है। इस पूरी प्रक्रिया को जान लें और यह प्रक्रिया अच्छे सुचारू रूप से कैसे कार्य करेगी उसको भी जान लें। हमारे फॉस्फोजिन सिस्टम द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा यदि समाप्त होती है तो हमें ऊर्जा मिलती है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल से। इतना जान ले, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब ऊर्जा चाहिए अपने आप ये क्रिया घटित होगी। ईट ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए कल्पना में परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में 1 लाख है तो 2 लाख पायरिक एसिड बनेंगे। क्यों? ये टूटना, ये ब्रेक डाउन क्यों हुआ? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये दैट एंटर्स इनटू द सेल, सेल में कोशिका में प्रवेश करते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है और ये पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित होते हैं तो प्रत्येक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जिसको मिल गई ऊर्जा में परिवर्तित हुई, जिसको नहीं मिली वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है एंड वी फील फटीग, और हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर देर तक थकान को हम कब दूर रख पाएंगे? जब लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम से कम हो। और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम से कम कब हो? अधिक से अधिक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन मिलती है। यदि हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल, स्तर तक अधिक ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हम देर तक थकान को दूर रख सकते हैं। तो ये कारण था। एसेंशियली ए स्पोर्ट्समैन or a player of arm wrestling should include practices from the field of yoga, few asanas as well as any pranayama. Maybe Bastrika pranayama should include one oxygen based pranayama and one carbon dioxide based pranayama. मेरे प्रस्तुतिकरण का अंतिम भाग मेटाबॉलिज्म एंड स्टेट ऑफ होमोस्टेसिस। हमें एक संतुलन की स्थिति भी बनाकर रखनी है जो योग बनाता है, उसको थोड़ा समझते हैं। यदि विज्ञान के आधार पर हम बात करें, वैज्ञानिक सोच के आधार पर बात करें, इन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जितने भी चयापचय संबंधी गतिविधियां होती हैं 2 वर्गों में, 2 चरणों में होती हैं। वन इज कैटाबॉलिक इन नेचर, अनदर इज एनाबॉलिक इन नेचर। एक प्रकृति से कैटाबॉलिक है, एक प्रकृति से एनाबॉलिक है। और जो कैटाबॉलिक है वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स है, ऊर्जा का ऐसा स्रोत है, ब्रोकन डाउन रिलीज एनर्जी एंड हीट, जो कि इस प्रतिक्रिया करके ना ऊर्जा उत्पादित करता है और साथ साथ हीट उत्पादित करता है। और यह योग की भाषा में नियंत्रण किया जाता है हमारी पिंगला नाड़ी से। दिस इज द माइक्रो वेसल वेयर द प्राण फ्लो। ध्यान रहे। दूसरी तरफ जितनी भी एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और रिस्टोर करती है एनर्जी सोर्सेज को, और यह हमारी दूसरी नाड़ी ईडा नाड़ी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अब हमें प्रश्न उठता है कि हमें एनाबॉलिक एक्टिविटी अधिक करनी, एनाबॉलिक जो प्रकृति से वो अधिक करनी चाहिए या कैटाबॉलिक एक्टिविटी अधिक करनी चाहिए। तो जो उसके लिए हम थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। हमने खाना खाया, फूड लिया, दैट रिलीज एनर्जी। 2 स्टेजेस में हुआ। पहले स्टेज में हमने बात कर ली कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड इन द सिंपल वंस, और दूसरा है कि सिंपल फूड कंपोनेंट्स हैं या सिंपल मॉलिक्यूल्स कहें, उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करके, और वो कन्वर्ट होते, परिवर्तित होते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जिससे कि उत्पादन होता है भरपूर ऊर्जा का। लेकिन सेकंड स्टेज इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेज में रेस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं। सेकंड स्टेज इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। एंड दिस केमिकल रिएक्शन अकरिंग इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ 2 बेसिक टाइप्स।
वन इज कैटाबॉलिज्म, अनदर इज एनाबॉलिज्म। तो जो कैटाबॉलिज्म की हम बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल वंस में कन्वर्ट करती हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है और ये एक एनर्जी और हीट का प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल है इसके हमारे पास कि डाइजेशन में यूज होता है, रेस्पिरेशन में यूज होता है। दूसरी तरफ एनाबॉलिज्म है, इसमें क्या है, जो सिंथेसिस करता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल वंस में। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव था, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एंड दिस रिक्वायर एनर्जी कॉल्ड एंडरजोनिक रिएक्शन। और उदाहरण कहाँ यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो जो फंक्शंस है दोनों के, अब बात आती है, हमें बात थी ऊर्जा की, ऊर्जा में भी स्पेशली एंडोरेंस के लिए और स्ट्रेंथ के लिए एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, these are typically associated with the increased sex drive and serve to synthesize proteins and facilitate muscle growth। तो ये जो मांसपेशियों का आकार बढ़ाती हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करती हैं और हमारी सेक्स ड्राइव को बढ़ाती हैं, वो एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, वो बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं उसके ठीक विपरीत कार्य करते हैं, अपोजिट इफेक्ट है। These erode muscle tissues and decrease inflammation, मांसपेशी का आकार को कम करते हैं। तो कुल मिलाकर अब और एग्जांपल इसके कौन कौन से, कॉर्टिसोल है, ग्लूकागोन है, प्रोगेस्टेरोन है, एड्रेनलिन है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला कि एक आर्म रेसलर को तो एनाबॉलिक हार्मोन्स चाहिए, कैटाबॉलिक हार्मोन नहीं चाहिए, क्योंकि कैटाबॉलिक हार्मोन तो आपके मसल साइज को रिड्यूस करेंगे, एनाबॉलिक हार्मोन आपके। तो ऐसी गतिविधि, ऐसा क्या करें जिससे एनाबॉलिक हार्मोन्स अधिक सीक्रेट हो और कैटाबॉलिक हार्मोन्स कम सीक्रेट हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसा नहीं है कि हम केवल एनाबॉलिक ही, लेकिन हमें द बॉडी रिक्वायर बोथ, हमें कैटाबॉलिक भी चाहिए, एनाबॉलिक भी चाहिए। असंतुलन की स्थिति तो दैट विल लीड टू इलनेस। तो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, अब निष्कर्ष, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज प्रोड्यूस मच मोर कैटाबॉलिक हार्मोन्स। तो हमें, जो कि एक आर्म रेसलर है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड, कि सूर्य नमस्कार बहुत अधिक देर तक न करें, डायनामिक सूर्य नमस्कार बहुत अधिक देर तक न करें। हम एक्सप्लोजन के साथ सूर्य नमस्कार या दूसरे योगिक प्रैक्टिसेस करें। और ये जो कैटाबॉलिक हार्मोन फिर क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम कर देंगे पुरुषों में और महिला में एस्ट्रोजन के लेवल को घटा देंगे। इसके एक घातक परिणामों का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और द बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, तो वो कहलाती है स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ बॉडी। तो हमें बेशक दोनों हार्मोन चाहिए, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, किस लिए, होम्योस्टेसिस को बनाए रखें, लेकिन बहुत अधिक हमें लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी आसन को होल्ड करें या कुछ भी करें तो हमें वो गतिविधि करनी चाहिए जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रेशन हो। एंड दिस होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय द थर्ड नाड़ी, that is the main nadi, sushmana nadi, that is the junction between these two, ईड and पिंगला नाड़ी, as per the yogic literature। तो कुल मिलाकर ये बात थी कि हमें कुछ ऐसा करना फॉर रिजुवेनेशन, नवोन्मेष के लिए, ताकत और एंडोरेंस के लिए। लेकिन हम एंडोरेंस, उस बेसिक एंडोरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस की बात, कि स्ट्रेंथ और एंडोरेंस साथ साथ विकसित हों, जो कि एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो कुल मिलाकर वो एनाबॉलिक हार्मोन्स की श्रेणी के हार्मोन्स अधिक सीक्रेट होंगे, दैट विल इंक्रीज द साइज ऑफ आवर मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होगा, प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ेगी। और इसलिए हमें एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज को न करके, और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो कि मेरे प्रस्तुतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, कि जो बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो आप इस भ्रम में न रहें कि हम कोई मेंटल एक्टिविटी, मेडिटेशन करेंगे तो वो हमारा इस परफॉर्मेंस पर प्रभाव नहीं डालेगा। Essentially that will affect our performance also। Again I express my sincere thanks to each and every unit of the organization। मैं अपने सीनियर प्रवीण जादौन सर का धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं प्रवीण डबास जी का, प्रीति जानियानी जी का, रजनी कुमार जी का और प्रोफेसर अशोक रुस्तगी प्रिंसिपल को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आमंत्रित किया। मैं श्री लक्ष्मण भंडारी जी का भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं सभी प्रतिभागियों से मेरा आग्रह है, इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो विदाउट हेजिटेशन, निसंकोच पूछिए। और यदि बोलना नहीं चाहते तो यू मे राइट इन योर चैट बॉक्स ऑल्सो।
अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. Okay. So thank you so much, sir, for. Thank you, madam. Uh, Thank you. आप सभी को and धन्यवाद. yes, before we move on further, I would like to tell you all about more about Dr. Rajiv Chaudhary. And it was such an honor to listen to you, sir, because you are a busy person and you are also a person sought by IITs and AIMS for your wisdom. And he has been a visiting professor in different parts of the world. He has delivered lectures in Sri Lanka, Singapore, Poland, Germany, and he has delivered lectures for UGC HRDs in international conferences, in national conferences. Uh, Thank you so much for your time, sir. Thank you, madam. Thank you. Thanks. Madam, may I leave now? Yeah, sure, sir. Next. So next up we have Dr. Ajay Dhankar. He is the sports professor, head of department physical education, Government College, Gwalior. His educational achievements so far. So he has done his PhD from LNIP Gwalior. He has diploma in nutrition and health education, and his research accomplishments are subpar. He has certification from University of Colorado. The first he is the first person in his field in this field of physical education to work on muscle biopsy and muscle fiber type identification through MRI and ultrasonography. Today, Dr. Dhankar is going to present on psychophysiological concept of strength training. Sir, the dice is yours. Please go ahead. Okay, thank you so much. I think I am audible to you all. Namaste to all you. Yes, sir, you're audible. Okay, I am audible to you all. Okay, good evening to all the listeners, and thank you to the organizing team for inviting me as a resource person. My name is Dr. Ajay Dhankar, and I'm going to present my views on the topic psychophysiological concept of strength training. Let me share my slide with you. I'll be keeping the both languages, Hindi and English, but I'll be trying to be in English so that wait, let me. Okay, is my screen visible to you all? Yes, sir. Okay. Yes, sir, it's visible. So you can see my topic, psychophysiological concept of strength training, and particularly I'm going to talk about the arm wrestling specifically because I have done my research and all my work for this. And starting with the topic, you can see by the definition, strength is the ability to overcome and act against resistance. इसका मतलब क्या है कि अगर आप strength की basic से basic definition को भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है कि strength क्या है? It is the ability to overcome and act against resistance, and arm wrestling is the perfect example to understand the strength. यहाँ पे हमें एक्ट भी करना है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में और उसको ओवरकम करना है ताकि जाके हम उस मैच को जीत सकें. तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेंथ का जो हम आर्म रेसलिंग से रिलेट करते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द आर्म रेसलिंग पार्ट, आई थिंक वी शुड लुक फॉर द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द आर्म. सो इन द पिक्चर ए यू कैन सी the bones of the upper arm or the upper limbs. You can see the scapula, humerus, radius ulna, and the radiocarpals and the metacarpals. In the picture B, you can see the major muscles of the upper arm. Yeah, you can see the triceps, biceps, and brachioradialis, and the flexors of the forearms. And this picture C, you can see the different segments of the upper arm, that is the trunk segment, arm segment, or the humerus segment, the forearm segment, and the hand segment. So these are the three basic classification for the anatomy of the arm. You must be knowing this. And this is basic anatomy for the movement of arm. See, our arm can move in this direction and this direction. So you can see where the green part, these green movements, or you can say the shoulder abduction, the shoulder medial rotation, elbow flexion, or wrist abduction, these movements will win you a arm wrestling match. इसका मतलब क्या है कि जो
जो मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं ग्रीन में, ये मूवमेंट्स आपको हेल्प करेंगे किसी भी आर्म रेसलिंग मैच को जीतने के लिए, और जो मूवमेंट्स है आपके रेड में, दे लेट यू टू लूज अ मैच। तो इसका मतलब क्या है कि आर्म रेसलिंग का मूवमेंट क्या है कि हमें दूसरे के सामने वाले के आर्म को नीचे गिराना है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से मूवमेंट्स पे ध्यान रखना है, यू कैन सी इन द ग्रीन पार्ट एंड इन द रेड पार्ट, यू शुड बी अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ movements during the match. Okay, so let's understand the neuro part or the neurophysiology of the arm wrestling. So आर्म रेसलिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके कौन कौन सी सर्वाइकल नर्व्स हैं या फिर क्रेनियल नर्व्स, जो मैं इनको स्पेसिफिकली कहूंगा कि कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आपके आर्म को स्टिमुलेट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी फोर आर्म है, मेरी बाइसेप्स है, मेरी ट्राइसेप्स है, कलेक्टिवली कौन कौन सी न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन से आती हैं, वो स्टिमुलेट करती हैं। तो आपको याद रखना है कि क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 8 एंड थोरेसिक T1, ये 3 नर्व ऐसी हैं जिसको हमें सबसे ज्यादा पता लगता है कि आर्म रेसलिंग में स्टिमुलेशन में हेल्प करती हैं, C7, C8 एंड T1, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, this is quite disturbing if you are opening your mic in between the lecture. Okay, C7, C8 and T1, these are the 3 nerves which we are going to specifically thinking about कि ये हमारे एक आर्म रेसलिंग मैच में important है। And you can see the neck part from where it is originating. ये जो आपका neck part है, इस neck part से ही आपकी ये 3 specific neurons क्या होती हैं, originate होती हैं, या फिर nerve impulse यहाँ से start होती है। इसलिए आप, अगर मैं आपको कहूंगा कि किसी को आर्म रेसलर बनना है, तो सबसे पहले मैं उसको कहूंगा कि यू शुड बी ट्रेनिंग योर नेक। आप जितना ज्यादा आप अपने नेक को ट्रेन करेंगे, उतना ज्यादा आपका आर्म्स का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज दीज 3 न्यूरॉन्स आर स्टिमुलेटिंग योर मसल्स ऑफ arms with the specific motor unit recruitment and the muscle fibers, right? जितना ज्यादा हम अपनी नेक एरिया को ट्रेन करते हैं, उतना अच्छा हमारे हाथों का रिस्पॉन्स बनता है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं राइट हैंड से, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस एक टाइम पे आके स्टेगनेट हो जाती है, यू शुड बी फोकसिंग ऑन द लेफ्ट हैंड, सो दैट, जिसको हम कहते हैं कि बायलेटरल डेफिशिएट होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है, जब हम राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड वीक होता है। If you want to increase the performance of the right hand, you should be working with the left hand. जिससे क्या होता है, bilateral deficit बैलेंस होता रहता है, क्योंकि हमारी नर्व इस तरफ भी आती हैं और इस तरफ भी आती हैं। तो हमारा मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इस हाथ का तो अच्छा रहता है, बिकॉज ये हमारा डोमिनेटिंग हैंड। हम लेफ्ट हैंड को भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये पार्ट भी अच्छा हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग टू द आर्म रेसलिंग मैच, बेसिक क्या है इन आर्म रेसलिंग मैच? द ऑब्जेक्ट इज योर अपोनेंट हैंड। ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई जो आपका अपोनेंट है उसका हाथ क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा एम रखने वाली चीज है वही, और आपको क्या करना है, उस हाथ को नीचे करना है। इसका मतलब क्या है, देयर एल्बो इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड योर गोल इज टू अप्लाई इनफ फोर्स on the opponent's hand so that your opponent's forearm rotate to the elbow and ends up on the touching the table. इसका मतलब क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके अपोनेंट का, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपको क्या करना है, चेंज करना है। आपको इतना फोर्स अप्लाई करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होके आपका हाथ नीचे की तरफ गिर जाए। तो ये एक आपका आर्म रेसलिंग का बेसिक है जो कि हमें पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फिजियोलॉजी, एज earlier speaker and the first speaker said, excuse me sir, we cannot see the presentation on the screen. Still you can see? No, it was there, but you stopped presenting. Now we cannot. Okay, you can see there? No sir. Okay. Okay, is it visible now? Yes sir, but you have shared the entire tab, I guess. It's lagging the video. Okay, now it's okay. Okay, now understanding the basic contractions of the body, you can see there are the 3 basic contraction: isotonic, isometric and isokinetic. So in normal real world we talk about the isotonic and the isometric part, right? But when I talk about arm wrestling,
इट इज मोर अबाउट पुलिंग नॉट पुशिंग। इसका मतलब क्या, आर्म रेसलिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, पुल करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपोनेंट के हैंड को पुल करना है एंड यू शुड बी pulling the opponent hand and keeping it to the ground। इसका मतलब क्या है कि we need to be focusing on the concentric part of the movement। हमें क्या करना है, concentric movements पे फोकस ज्यादा करना है। अगेन एज राजीव सर सेड, ATP PC system is going to be dominating the system, एनर्जी सिस्टम वही डोमिनेट करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाउ टू विन अ आर्म रेसलिंग मैच। माय स्क्रीन इज विजिबल ना? yes sir, please. Yes, sir. Please, Yes. okay. Please Okay. go ahead, sir. So how to win an arm wrestling match, right? So let's talk about some physics behind the arm wrestling match. And you can see the third class lever. This third class lever is the speed lever of the body, and you can see this is the formula which we are going to use to win a arm wrestling match. And you can see the force vector and the distance vector, and you can see torque is nothing but a rotational force। टॉर्क क्या है, आपका एक रोटेशनल फोर्स है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस से। अब अगर आपको मैच जीतना है तो आपका क्या एंगल होना चाहिए, तो जो आपका डिस्टेंस वेक्टर है वो होना चाहिए आपका 90 डिग्री पे। जब आपकी एल्बो 90 डिग्री पे वर्क करती है तब आपका कॉस एंगल 90 होता है और मैक्सिमम आउटपुट 1 होता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब आपका एल्बो 90 डिग्री पे है तब आपकी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है कि आर्म रेसलिंग के मैच में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो यू शुड बी वर्किंग ऑन द 90 डिग्री एंगल, एंड फॉर विनिंग द मैच यू शुड बी अप्लाइंग द मैक्सिमम फोर्स विद दिस पर्टिकुलर एंगल और द रोटेशनल फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क। नेक्स्ट, अब आर्म रेसलिंग में और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आती है वो आती है आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, राइट। अगर मैं आपको ये समझाऊं ये क्या होता है, ये प्रेशर होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी का, और बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जो आपका डायफ्राम है और जो आपका पेल्विस है, जो आपका एरिया है, इस एरिया में आपके ऑर्गन्स हैं, फ्लूइड्स हैं, और ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, राइट। तो जब भी आप किसी एक ऐसी पोजीशन में जाते हैं जहां पे आप स्टैटिकली किसी एक अपोनेंट के हाथ को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो आपके जो बॉडी के इंटरनल प्रेशर्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, दे शुड बी मेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर सो दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कैन बी प्रोड्यूस एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या है, यू कैन सी जब हम अपने वेस्ट पे बेल्ट लगा के स्क्वाट करते हैं या फिर बेंच प्रेस करते हैं तब हमारा आरएम बढ़ के आता है। क्यों बढ़ के आता है? बिकॉज ऑल द एब्डोमिनल प्रेशर और थोरेसिक प्रेशर इज गिविंग अ रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज ग्रेटर फॉर योर परफॉर्मेंस। इसलिए अगर मैं कहूंगा कि आप नॉर्मली वेट लिफ्टिंग वाला बेल्ट लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। अगर आप विदाउट दैट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। बट अगर आपको मैच जीतना है तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर थ्रू योगा। अगर आप वज्र आसन में भी बैठते हैं, आप हल आसन करते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होता है, थ्रू योगा आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो अच्छा बिल्ड होता है और वहां से आप एक अच्छा फोर्स आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज मोर फिजियोलॉजिकली आई कैन से इज डिफाइंड, वो है आपका वल्सफा मैन्योर। वल्सफा मैन्योर को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आर्म रेसलर है, उसने एक मैच खेला और वो जीत गया, उसको अब अगले राउंड में एक मैच खेलना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप एक शॉर्ट इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है बॉडी का कम हो जाता है। आपके जो एक्सट्रीम एंड्स पे जो लिम्स हैं वहां पे क्या होता है, ब्लड पहुंच नहीं पाता है और हार्ट एकदम अपनी बीट को बढ़ा देता है। तो सडन जो स्पाइक होता है आपकी हार्ट रेट का, उस हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेडिकल टेस्ट कह लो या फिर मेडिकल रेमेडी कह लो, उसके हम कहते हैं वल्सफा मैन्योर या फिर ब्रेथ होल्डिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक मैच मैंने खेला और मैं जीत गया, अगले मैच के लिए मैं जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपनी हार्ट रेट को डाउन लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई शुड बी पुटिंग माई हैंड ऑन द नोज एंड मैं अपना माउथ बंद करके रखूंगा और फोर्सफुली एक्सपायर करूंगा। क्या करूंगा, फोर्सफुली एक्सपायर करूंगा। यू कैन सी आई एम नॉट लेटिंग द एयर आउट। कैसे? वल्सफा मैन्योर इज द परफॉर्मेंस ऑफ फोर्स एक्सपीरेशन अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अपना नाक और मुंह बंद करके फोर्सफुली सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं, उस प्रैक्टिस से हमारा हार्ट रेट एकदम
डाउन हो जाता है। तो while practicing arm wrestling in between the matches, you can practice Valsalva maneuver for your increased performance, right? ओके, पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है? पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल को आप ऐसे समझिए कि जब आपको एक बड़ा आउटपुट लगाना हो, जैसे कि मुझे आर्म रेसलिंग में क्या करना है, सामने वाले के हाथ को नीचे गिराना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में होगा ये कि मैं अपना फोर्स एक ही दम लगा दूंगा, बट क्या मैं अपना सारा फोर्स एक ही बार में लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ। तो ऐसे मैचेस जिसके अंदर मुझे अपना मैक्सिमम या फिर पीक परफॉर्मेंस देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने मैच से पहले एक हैवी बेंच प्रेस लगा लेते हैं या फिर एक हैवी स्क्वाट लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल मैच होता है उसके अंदर हम और अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ पोटेंशियल, राइट? पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल इज द न्यू ट्रेंड इन दिस स्पोर्ट्स एरिना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्या होता है कि हमें जब एक मैक्सिमम फोर्स पे वर्क करना होता है, मैक्सिमम पीक पे आके वर्क करना होता है, उस सिचुएशन में पहले पहुंचने से हम क्या करते हैं? एक हैवी बेंच प्रेस, हैवी डेडलिफ्ट या हैवी स्क्वाट, जो कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं, हम वो करके आते हैं, जिससे कि हमारा फोर्स आउटपुट बढ़ जाता है हमारे एक्चुअल स्किल के अंदर। तो जो भी आर्म रेसलिंग कर रहा है वो क्या करिए? एक हैवी स्क्वाट लगा के आइए, हैवी बेंच लगा के आइए और देखिए कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है या घटता है। चलिए और देखते हैं। एक और जो ट्रेनिंग मैं आपके सामने लेके आता हूं वो है आपकी ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग को आप ऐसे देख सकते हैं कि व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज इन द जिम, आप सपोज करते हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रीचर कर्ल कर रहा हूं। जब मैं प्रीचर कर्ल करूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना एक बैंड लूंगा और अपने बाइसेप्स पे टॉप पे लगा दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा ब्लड फ्लो जो होगा, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो इस बैंड की वजह से फोर आर्म्स में नहीं जा रहा है। तो जब हम ट्रेनिंग ऐसे करते हैं जहां पे हम ब्लड को फ्लो नहीं होने देते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो हाइपरट्रॉफी होती है वो बढ़ के आती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग करते हैं, तब आपका ब्लड उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेगा नहीं, बट जैसे ही आप उस बैंड को हटाएंगे तो एक ही दम जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा वहां पे, तब आपका हाइपरट्रॉफी भी अच्छी होएगी और आपकी जो इंजरीज जो हमेशा रहती हैं, जैसे कि कई बार कहते हैं ना कि ये जो आपका यहाँ पे एल्बो के जो एंड पे, इसको हम कहते हैं ब्रूसा, जो भी आर्म रेसलिंग करता है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन रहता है, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लेमेशंस रहती हैं। तो उसके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो आता है वो आता है टैपरिंग एंड परफॉर्मेंस एंड डी ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ऐसे स्ट्रेंथ में जहां पे आपको बार बार स्ट्रेंथ को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेस्ट का प्रिंसिपल याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट का मतलब क्या है कि आपको आपकी मसल मेमोरी को कुछ देर के लिए रेस्ट देना पड़ेगा, डिट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी क्या करे? नए सैटेलाइट सेल की मदद से अपनी मसल्स की हाइपरट्रॉफी कर ले। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपके जो सेल्स हैं ये नॉर्मल हैं। जब आप क्या करते हैं? ट्रेनिंग नहीं करते हैं और आप क्या करते हैं? थोड़े दिन के लिए ट्रेनिंग छोड़ के फिर जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ब्रेन को पता लगता है अच्छा इस एरिया को और न्यूट्रिशन की जरूरत है, और न्यूट्रिशन मिलता है। जब हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में रहते हैं तो शायद वो लैक हो जाता है। अब जब आप वापस ट्रेनिंग में आते हैं तो आपके नए सैटेलाइट सेल्स आते हैं जो कि नई मसल हाइपरट्रॉफी करते हैं, और मसल हाइपरट्रॉफी जब होती है इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ने स्ट्रेंथ गेन की है इन टर्म्स ऑफ न्यू मसल फाइबर्स और द न्यू न्यूरल ड्राइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्म रेसलिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखो, नथिंग इज बेटर देन एक्चुअल प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि आप अगर आर्म रेसलर हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली, राइट? और आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है वो करनी है आपकी फिंगर्स की डेक्सटेरिटी की। इसका मतलब क्या है कि आपके थंब की एक्सरसाइज अलग होगी, आपके इंडेक्स फिंगर की एक्सरसाइज अलग होगी, आपकी हर फिंगर की एक्सरसाइज अलग होगी। इसका मतलब क्या है कि यू शुड बी प्रैक्टिसिंग डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज विद योर ईच एंड एवरी फिंगर। और आपको क्या करना है? जितने भी आपके टेंशन वाले वायर्स होते हैं, यू शुड बी कीप प्रेसिंग इट सो दैट योर फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर कैन इम्प्रूव। चलिए और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। भाई आप रिस्ट एंड फोरआर्म के लिए क्या कर सकते हैं? बारबल के साथ कर्ल कर सकते हैं, रिस्ट रोल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको अपने टेंडेंस या फिर लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं? You should be using TheraBands with a support so that you can practice the particular movement of pulling towards। अच्छा, जो ये आपकी पुलिंग की ग्रिप होती है, दिस इज कॉल्ड हुकिंग ग्रिप। जब आप हुकिंग ग्रिप में आते हैं
तब आप किसी भी चीज को गिरा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हुक ग्रिप क्या हो गई है, फंस गई है, तो आपको क्या करना है, अपना थंब निकाल के अपोनेंट के हैंड के ऊपर रख देना है और उसको ही पीछे खींचना है, ताकि आप क्या कर सके, एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए। और जब आप स्टेबल पोजीशन में आते हैं तो अगेन यू कैन पुल इट, राइट। तो ये जो आपकी ये जो ट्रेनिंग है फ्लेक्सिबल बैंड के साथ आपको ऐसे ही करनी है, सो दैट यू कैन स्टिमुलेट द एक्चुअल प्रैक्टिसेस इन द practice sessions. So how can you succeed in the arm wrestling? You should be focusing on the strength of the tendons, forearm, fingers, strength, wrist, and endurance. You should be focusing on the correct technique along with the confidence, strategy, and the weight and the speed will be going to be a pivotal role for the performance, right? So thank you. And you can see physical activity and after that physiological adaptation, and it will going to increase the human performance. And on my behalf, I would like to say belated happy International Yoga Day, International Olympic Day, and World Handball Day. Today is World Handball Day, so it is a week of sports, and I hope you have enjoyed my words or the concept of physiology in front of you. You can ask any questions, relevant questions, or that's it for my side. Ma'am, back to you. Thank you so much, sir, for the wonderful session, for the in-depth session that you have conducted here. And if there are any questions, participants are requested to ask them. Please, you can ask any sort of questions regarding the physiological concepts of arm wrestling. Since there are no questions, we'll move further. Thank you so much, Dr. Dhankar, for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you. Next up, we have. Oh, okay. Next up, we have Dr. Rahul Raj joining us today. He is the Assistant Professor, Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, BHU. And Dr. Raj will be presenting on application of yoga in arm wrestling and Olympism. The stage is yours. Thank you, Anjali. I've made a small paper for today's webinar, so it's better I should read it for the benefit of all of you. Hello and good evening to all of you. It is a matter of delight that KAPG College, Kasganj, Uttar Pradesh is organizing this webinar on the occasion of National Olympic Day as well as the International Yoga Week. The topic of my deliberation today is the application of ancient yoga practices in the sport of arm wrestling and Olympism. My topic dwells in two distinctively opposite time zones. One is the distant past of Indian history, and the other is the modern contemporary world. Therefore, I have classified my deliberation into two sections. The section A elaborates the antiquity of yoga philosophy in the light of ancient classical Indian text, and section B evaluates the scope of application of ancient yoga practices in the sport of arm wrestling. So, if all of you are interested in knowing the antiquity of yoga, then I should elaborate section A, or should I go direct on section B? So I think I should elaborate section A in a brief manner. Tracing the antiquity of yoga. Some historians trace the antiquity of yoga back to the Vedic times. It is said that the Nasadiya Sutta in Rig Veda started appearing from 6th to 5th century BCE, the same time when the Shakyamuni Buddha and Mahavira propagated the philosophy of Chitta Vishuddhi, or the purification of mind, to the masses. It is said that the Kathak Upanishad was the earliest text which refers to the term
yoga the same meaning as in the modern times. The Yoga Sutra, a much later Sanskrit classical text written by sage Patanjali in the 2nd or 4th century AD, is widely regarded as the fundamental classical text on the philosophy of yoga. It refers to the 8 major elements of yoga, which leads meditator or yogi to the ultimate bliss or nibbana or kaivalya. The Ash- the Ashtanga or the 8 elements of practices are Yama, that is abstinence, Niyama, that is observance, Asana, that is yogic posture, Pranayam, that is breath control, Pratyahar, that is withdrawal of the senses, Dharana, that is concentration of the mind, Dhyana, that is meditation, and Samadhi, that's absorption of all the qualities into your chitta or the heart. On closer scrutiny, we can say that the yogic thoughts or its practices are solely the legacy of Vedic culture, because on a number of occasions we come across the Buddhist and Jaina philosophies intermingling with the interpretation of Patanjali. It is also noteworthy that Buddhism, since the time of Shakyamuni, and much earlier, if we include the era of previous Buddhas also, had a strong esoteric philosophy of contemplation and meditation. The same thing is true to the philosophy of Tirthankara in Jainism, which claims to be a pre-Vedic religion of South Asia. Both these major religion coming under the ancient Shramanic culture are based on the same doctrine over which the tenets of yoga were erected. Therefore, strictly speaking, it is not wise to say or claim that the yoga is the treasured knowledge of Hinduism alone. Rather, it is the intangible cultural heritage and shared legacy of all the ancient traditions who flourished together on Indian soil. Surprisingly, in the post-independent India, when yoga re-emerged after a prolonged slumber during medieval period, the term yoga became confined to asana, which has been only one of the 8 aspects of the yoga, that is Ashtanga yoga. Now I should continue with section B, that is the application of ancient yoga practices in the sport of arm wrestling. Ken Doherty, former US decathlon champion, once said that the 5 S's of sports training are stamina, speed, strength, skill, and spirit. But the greatest of them is spirit. According to the NCERT book, the purpose of sport training is to achieve optimal level performance in a particular game and sports. It is a special process of preparation of sports person based on scientific principle aimed at improving and maintaining higher performances capacity in different sports activities. Yoga finds its place in nearly all the above requirements, and hence special attention is being given nowadays and research is being conducted on the efficacy of yoga practices in the improvement of sports performances. I have further divided this section into 2 subparts: yoga for arm wrestling athletes and yoga for arm wrestling officials and referees, because both of them needs yoga. It is not only athletes or the player. Yoga is equally important for officials also, for referees also. So I have divided this section further into 2 parts. So yoga for arm wrestling athletes. Unlike other arm wrestling, unlike other wrestling and grappling sports we see today, the arm wrestling could well be termed as the best example of an implied or tacit martial arts, which requires intense physical strength and stamina, fueled by the spirit to conquer the battle on the table. This challenge could effectively be taken care of by the scientific and systematic application of yoga. Arm wrestling is all about focusing on the opponent's movements and anticipating his or her next move. This split second analysis and the situation, subsequently positioning oneself in the is the mantra to win the bout. In split second,
a player has to decide what he has to do. In that split second, he has to decide that thing. That's the mantra of the winning. Here, the yoga is very helpful. Yoga impact an arm wrestling athlete's ability to focus on the present moment. This is important since a player cannot scrutinize the micro scenario on the table during the bout without becoming a Jagrat or adequately awakened being. The yoga practice increases the ability to focus and concentrate, and hence the ability to make decision becomes more clearer for an athlete. Yoga eases pain and reduces injury, especially for arm wrestlers who often suffer from wrist, elbow, and shoulder injuries. If practiced properly, yoga builds lean muscles which help build more strength with less weight. And that could be the boon for arm wrestling athletes who are ever conscious about their body weights. As we know that according to World Arm Wrestling Federation rules, the championship is conducted in 5 kg categories weights. So all the athletes are very much, conscious about their weight. Yoga builds their lean muscles and reduces the weight. And here yoga is very helpful for them. In a nutshell, the following points could be identified for the application of yoga for an arm wrestling athlete. So I have identified some points which are as under. Number 1, sustained mind-body connection during the bout. Second, examining the opponent's capability and shortcomings. If we know the capability on which point my opponent player is strong, if he's strong in biceps, then he is good in hooking. But if I come to know about his shortcoming, if his fingers are weak, then I might try a top roll. So on the very split second on the table before the go of a referee, if we analyze the weaknesses of the opponent, we can make full use of those things in split seconds. And that's where the focus comes into application. The third point is evaluating the available opportunities on the table. For example, if an opponent's hand is too long, and then you have to make proper adjustment to grip those hand. And although there are certain advantages of a long limb, but there are certain disadvantages also, since an opponent with long hand cannot apply shoulder properly. So in that situation, the player can get the benefit of that thing. So evaluating the available opportunities on the table is also one of the biggest thing. Fourth number is selection of technique. Once the two players come on the table, then on that particular moment, both the players should evaluate which technique they have to apply in split second. The moment the both players grip, that moment they have to think on their mind which technique they have to apply and in which variation that technique has to be applied to get the optimum result. So fifth is move and counter move. Sixth point is executing the complex moves. And this is important. Sometimes a person starts his arm wrestling in a hook position, but on a way, he thinks that hook is not proper since the other opponent has a very strong bicep. Then he starts mending his ways in a top roll. So that becomes a complex move. So a player should be able to handle that complex move also. And that's where the yoga or the tranquility of mind comes into play. Number 7 is adjustment in technique in midway during the bout. Adjustment in techniques during the midway in the bout. For example,
if a player started his bout by pushing sideways the opponent, but on the way he finds that it's very hard to pin him down since that the opponent is very strong, then he starts adjusting his technique, uh, applying the force from the side. He starts applying the force at the back. There's a back pressure. In this way, when he starts applying the back pressure, for example, if a player is like this and he has done till this, but he cannot win, then he starts pulling back the opponent. The more we pull the arm of the opponent at our side, the more powerful we become and he becomes more weak. That's the simple theory of lever in physics, as we know. So this is also very important because during the bout, many times I have seen the player, since I'm a referee from the past 25 years, and I'm into the game from the past 30 years. I've played this game for the first time in 1993. So I've seen that many times a player lose the bout just couldn't apply their common sense, their brain during the bouts. So this is also very important, that you should be awake at all the points of the match, of the bout. Number 8 is resilience under intense physical and mental pressure. Resilience under intense pressure, physical as well as mental. Like you can imagine, most of the people are yelling and shouting, and you have, in that charged atmosphere, you have to play the bout. And that's where your own patience, your own personality comes into play. Number 9 is controlling the temperament. I've seen many times that when players find their favorable grip, or when they start losing the match, they start giving they start disturbing the game. So that's the thing that controlling the temperament is also very important, and that's where yoga is useful. That the 10th point which I have identified where yoga is very useful for an arm wrestling athlete is demonstrating good sportsmanship. A good sportsmanship comes only from your own personality, how you are, how you behave with others. So a good sportsmanship is essential for not only for arm wrestling but for all the games. And yoga, certainly, if it soothes your chitta, if it calms your mind, then you'll not be provoked. Now, yoga for arm wrestling officials and referees. Now, this is a very new topic which I'm dealing, I think, for the first time, because we are in habit of preaching athletes, students, players. You do this thing, you do that thing, but we never apply those things on us. So it is, I think, for the first time that I'm giving the emphasis on yoga for arm wrestling athletes, especially for referees. Yoga not only helps the athletes to boost up their performance, it also raises the standard of administrative and technical officials as well. Many times we have witnessed unfortunate scenarios erupting from unprofessional behavior of organizing officials or referees. Although the immediate cause of such situation is most often the lack of professional knowledge and training of the concerned officials and referees as per the World Arm Wrestling Federation rulebook, which is last revised in 2020. But we have also sometimes witnessed the absence of basic etiquette and sportsmanship among them. This lacuna could be managed by the practice of yoga and meditation. The consistent yoga practice over a fair period could help in minimizing the occurrence of such situations by inculcating positive traits in the personality of officials and referees. In the nutshell, the yoga practices could effectively help the referees in the following ways. Now, I have identified 6 major aspects where
yoga can help the arm wrestling referees. Then the first point is enhanced focus on micro moves made by athlete. Let me tell you one thing. Last year when I went to Gwalior, and where a world-renowned um, referee came to watch that PPL Pro PANJA League matches. At one particular match, I was the center referee, and when the bout ended, he called me up and told me very politely that Rahul, you have missed 4 micro moves which the opponent has done, which one particular person has done. He has moved his elbow uh, above the touch pad, above the elbow pad, which you missed. And I was shocked. I was really shocked because I have not seen that macro moved in a split second. I have that thing slipped from my eyes, and not only from my eyes, being the center referee. The side referee also has not seen those moves, but the World Arm Wrestling Federation referee, who at least 20 feet far from the arm wrestling table, he judged those micro moves made by the players. Now, this is the focus. This is the level of focus we should inculcate in us. So, enhanced focus on my micro moves by the athletes is the first thing where yoga is very helpful for referees. The second is clarity in decision making without any ambiguity. Sometimes referees used to give decision which are very ambiguous and which results in protest and something like that. And protest, although it's a part of the game, but it disturbs the momentum of the competition and it delays the competition. So to avoid those unfortunate and unpleasant situation, the clarity in decision making is essential, and yoga is very useful for that thing. The third point is keeping in mind the relevant World Arm Wrestling Federation as well as Pro Panja League rules during the bout. Many new referees which have come nowadays, they don't have a clear-cut idea what the WF rule says about a particular situation. The PPL rules are a bit different from WF rules, but they are very effective. They are really very effective, and they enhances the quality of the game as well as they also minimizes the time spent during preparation. So a referee who is on the table, he should be very aware of all the relevant WF as well as PPL rules in mind. And according to those rules, he should conduct the championship. The fourth point is demonstrating discipline and etiquette. At many times, players have come up with this thing that a particular referee has talked ill or talked harsh to them. This is very unfortunate because a referee, it is expected from the referee to behave properly, to be very patient, and he should demonstrate his etiquettes. So there the yoga can help in minimizing the temperament. The fifth point is patience even when provoked. Patience even when provoked. That is very helpful. That should be there. And the sixth and the last point which I have identified where yoga is helpful for arm wrestling referees is that integrity to take right decision even under adverse conditions. Even under adverse conditions, a referee has that grit and integrity to take the right decision. So hence it is imperative to include yoga in every sphere of the game of arm wrestling, as it aids in not only enhancing the skill of the athletes, but also improve the efficacy of arm wrestling officials, organizers of the event, or the arm wrestling referees
performing on and off the arm wrestling table. So this is my small deliberation. Thank you all for your patient hearing. Thank you very much. If the August gathering has any query or question, please, you are free to ask me. Yeah, Anjali, it seems Yeah. you're saying something. Yeah. So participants are requested to post their question in the chat box. Meanwhile, we move on further because we are running at a time crunch. And I would like to welcome Praveen Devas, who is an actor, model, director, and director of Pro PANJA League, who is going to talk about PPL, the Pro PANJA League. Thank you for the lovely welcome, and thank you to everyone for inviting me. मुझे लगा आप मेरे बारे में भूल गए but thank you so much, and this is a very exciting time for arm wrestling. जैसे राहुल जी ने भी बताया, of course world arm wrestling pro पंजा लीग ने भी थोड़े से अलग रूल्स बनाए हैं इसको ऑडियंस के लिए और entertaining बनाने के लिए, because it is very important that once you come on a TV audience, and let me tell everyone that we are going to be coming on Sony Sports from July 28th to August 13th from 7 to 9 p.m. पहली बार है कि आर्म रेसलिंग इंडिया टीवी पर ऐसा लाइव आ रहा है, तो ये सब आर्म रेसलिंग कम्युनिटी के लिए, आर्म रेसलर्स, ऑफिशियल्स, रेफरीज, कोचेस, सब के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि आर्म रेसलिंग टीवी पे, और वो भी सोनी स्पोर्ट्स जैसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल पे आने लग रहा है. जो लोग आजकल क्रिकेट देख रहे हैं वो देख चुके होंगे कि प्रो पंजा लीग के प्रोमोज ऑलरेडी आ रहे हैं एशेज टूर के बीच में, जो कि बहुत बड़ी बात है अगेन कि आर्म रेसलिंग के प्रोमो क्रिकेट में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत लोग देख चुके हैं और एक्साइटेड हैं, और ये एक बहुत बड़ा मौका है आर्म रेसलिंग कम्युनिटी के लिए, स्पेशली आर्म रेसलर्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए. और प्रो पंजा लीग ने हमेशा बिलीव किया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो आर्म रेसलर्स के लिए है, क्योंकि जो स्पोर्ट है वो ऑफ कोर्स एथलीट से चलता है, एंड वी हैव ऑलवेज अटेम्प्टेड टू मेक अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम. अब तक हमारा जो मोटो होता था वो था आपकी किस्मत आपके हाथ, ताकि एथलीट्स को मालूम हो कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा. ऑफ कोर्स जैसे कई लोगों ने इससे पहले बात किया, यू हैव टू वार्म अप वेरी स्मार्टली, देयर आर लॉट ऑफ वेज व्हिच यू हैव टू वर्क आउट एंड गुड थिंग्स. मैं ये कहूंगा कि मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूं कि मैं आपको वो सब चीजें बता सकूं कि टेक्निकली किस तरीके से करेक्टली वर्कआउट करना है या प्रैक्टिस करना है. मेरा जो मकसद है वो आर्म रेसलिंग को बड़ा बनाना है, एक अच्छे मार्केटिंग के थ्रू इसको बड़ा बना के. और राइट नाउ लाइक आई सेड, दिस इज अ ह्यूज मोमेंट फॉर आर्म रेसलिंग इन इंडिया, जब पूरा हिंदुस्तान ही नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, आर्म रेसलर्स अराउंड द वर्ल्ड आर लुकिंग एट इंडिया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आर्म रेसलर्स को इंडिया में मिल चुका है. एंड एवरीबडी, लेट मी टेल यू, एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड wants to come into the Pro Panja League to India, which is again a very very big moment for us. हमारा जो न्यू बाय लाइन है वो है लगा पंजा, ये है भारत का खेल. सबको याद दिलाते हैं कि ये भारत का खेल है, बिल्कुल भारत का खेल है, आम आदमी का खेल है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट है वो बहुत कम है. अगर आप एक मोहल्ले में टेबल लगाते तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस टेबल पे खेल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक अलग से किट करें, पैड्स करें, जूते, ये वो नहीं. तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि फिटनेस के ऊपर भी बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है. जो दूसरे चीजें हैं जो कई बार यूथ को एंगेज करके रखते हैं आजकल, उनसे दूर रखता है. एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग, और दूसरों को दिखाने का भी कि आप में कितना दम है, कितना टेबल पर दम है.
और मैं कुछ अगर प्रो पंजा लीग के बारे में बताऊं तो हम 2020 में हमने शुरुआत की थी और हमने बहुत बड़े टूर्नामेंट्स के साथ शुरुआत की थी। त्यागराज में उस टाइम पे किरण रिजिजू जी जो उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो उन्होंने आके इनॉग्रेट किया अलॉन्ग विद मिस्टर विजेंद्र सिंह, ऑफ कोर्स जो सब जानते हैं इंटरनेशनल बॉक्सर हैं हमारे। उसके बाद हमने मुंबई में बहुत बड़ा इवेंट किया और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, और उसके बाद हमने गोवा में एक बोट के ऊपर इवेंट किया। लास्ट ईयर हमने ग्वालियर में फोर्ट के सामने बहुत बड़ा इवेंट किया, एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड यू कैन से प्रो पंजा लीग स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। लास्ट 11 महीने में हमारे 274 मिलियन व्यूज आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, जो कि दिखाता है कि इंडिया आर्म रेसलिंग देखना चाहता है, आर्म रेसलिंग देखने के लिए रेडी है। अक्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब 274 मिलियन व्यूज कोई छोटी चीज नहीं है, तो बहुत एक्साइटेड हैं सब। उसके बाद हम और भी कई इवेंट्स कर चुके हैं, होशियारपुर में, चंडीगढ़ में, अभी फिलहाल हमने एक और इवेंट किया भोपाल में बोट के ऊपर, जो कि अगेन बहुत ही एंटरटेनिंग था। और अब आ रहे हैं प्रो पंजा लीग के फर्स्ट सीजन के साथ, जिसमें 6 टीम होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया जुलाई 28 से लेके अगस्त 13 तक 17 दिन ये लाइव आएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे 7 से 9 बजे। और इसमें पहले 15 दिन जो 6 टीम है वो एक दूसरे के साथ 2 बार खेलेंगे, 2 times each they will all play each other. The 16th day there will be the semi-finals जो टॉप 4 टीम है, और 17वां दिन फाइनल होगा। तो बहुत ही एक्साइटेड है सब आर्म रेसलर्स, क्योंकि इसमें इंडिया का टॉप आर्म रेसलिंग टैलेंट देखने को मिलेगा। अगर आप वो नाम देखें जो लिस्ट है सब आर्म रेसलर्स के, तो बहुत ही टैलेंट है उसमें। और एक और चीज जो है जो हम बहुत ही अनोखी तरीके से कर रहे हैं वो है कि पहला लीग है जिसमें मेन, वुमेन और स्पेशली एबल सेम टाइम पर खेलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे के साथ नहीं, अपने अपने कैटेगरीज में। तो मेन के कैटेगरीज 6 हैं, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg और 100 kg और 100 kg प्लस। वुमेन्स के 3 कैटेगरी हैं, 55 kg, 65 kg और 65 kg प्लस, और स्पेशली एबल का एक कैटेगरी है। तो ये पहली बार हो रहा है कि मेन, वुमेन और स्पेशली एबल को सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और एक और चीज हम जो करते हैं जो इक्वालिटी के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे ईथॉस के लिए, प्रो पंजा लीग के ईथॉस के लिए, कि जो भी आपको रैंक के हिसाब से पैसे मिलते हैं पहले 2 साल, ऑक्शन तीसरे साल से शुरू होगा, तो तब तक इक्वल पेमेंट मिलता है। अगर आप पहले रैंक के प्लेयर हो, चाहे मैन, वुमेन या स्पेशली एबल हो, आपको सेम प्राइस मिलता है। तो ये एक चीज हमने शुरुआत की है और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं यही कहूंगा सब आर्म रेसलिंग कम्युनिटी की, जो जैसे प्रवीण जादव जी हैं यहाँ पे, राहुल राज जी हैं, लक्ष्मण सिंह भंडारी जी हैं और प्रीति झांगियानी जी थी, ये सब ने बहुत सपोर्ट किया है आर्म रेसलिंग को बहुत सालों से। और अब आर्म रेसलिंग का दिन आ गया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया टीवी पे आने लग रहा है, और इसके बाद और भी बहुत बड़ा होगा। देखिए, कोई भी स्पोर्ट जो है जब उसको ठीक तरह से मार्केट किया जाए और टीवी पे आता है तो उसका देखने का नजरिया अलग हो जाता है। आप कबड्डी को देख लीजिए, उससे पहले उसका नजरिया अलग था देखने का, लेकिन जैसे ही टीवी पे आया अब उसको एक बहुत ही प्रोफेशनल ग्लैमरस स्पोर्ट जैसे देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से प्रो पंजा के साथ भी और पंजा के साथ ऐसा ही होने वाला है। जो टीवी पे आ रहा है, ऑलरेडी प्रोमोस देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। पहले लोगों को बिलीव नहीं होता था कि प्रो पंजा सोनी पे आ रहा है, लेकिन जैसे ही क्योंकि लोगों को लगता था कि ये बातें हैं, लेकिन अभी प्रोमो देखते ही सब में बहुत एक्साइटमेंट हो गया है और विश्वास हो गया कि हाँ वाकई में प्रो पंजा लीग सोनी स्पोर्ट्स पे आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टक्कर होने वाले हैं। ये यहाँ पे इंडिया का लेवल जो है आर्म रेसलिंग में ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी है और आर्म रेसलर्स जो पहले छोड़ भी चुके थे वो सब वापस आ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड तब बढ़ता है जब आप ग्रास रूट लेवल से ऊपर आप इसको डेवलप करते जाएं, और ये भी हमने एक काम किया है, शुरुआत से हमने इसको ग्रास रूट लेवल में डेवलप किया है, चाहे भोपाल में हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे होशियारपुर, अलग अलग अभी गुवाहाटी हो गया है, अलग अलग शहरों में इसको हमने डेवलप किया है, ताकि जो इंडिया का यूथ है और जो न्यू जनरेशन है
वो भी इस स्पोर्ट में दिलचस्पी रखें और टैलेंट अपना दिखाएं, और इसकी वजह से बहुत बड़ा पूल हो गया है आर्म रेसलर्स का। और आगे जाके भी आप देखेंगे लीग खत्म होने के बाद भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स अराउंड कंट्री होते रहेंगे। और आर्म रेसलिंग को लेके मेरे ख्याल से ये दोबारा एक रिसर्जेंस होगा। आर्म रेसलिंग तो सब जानते ही हैं, ये आर्म रेसलिंग क्या है, बेसिक रूल तो मालूम है कि हाथ दूसरे का नीचे करना है, लेकिन दोबारा एक रिसर्जेंस होगा क्योंकि सब लोग इस गेम के साथ इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। सबने बचपन में खेल रखा है, लेकिन इंटरनेशनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कैसा होता है वो पहली बार देखेंगे। और मुझे जरूर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि सबको बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा जिस तरीके से हम इस स्पोर्ट को ऑडियंस के सामने लेके आ रहे हैं। तो बस मैं यही तक बात बोलना चाहूंगा, और सबको दोबारा मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मुझे इनवाइट करने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस है, अगर कुछ प्रश्न है किसी का तो जरूर पूछिए। Thank you so much, Mr. Tabas, for announcing the PANJA Day here. And students can ask their question. Participants here can ask their questions. And I am sure that athletes and enthusiasts here present, they would like to participate in PANJA Day. And for that, they are requested to join us Indira Gandhi Indoor Stadium, Delhi, from 28 July to 13th of August. Yes, everybody is invited to come and view the matches any day. July 28th to August 13th is going to be very exciting. यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को रिक्वेस्ट है कि वो दिखाएं। That the teachers and students joining from different universities in this webinar are requested to participate in the PPL with profound enthusiasm. And Participate का मैं promise नहीं कर सकता अभी फिलहाल देखने के लिए but please do attend it as well. Yeah. To remember 28 July to 13 August in Indira Gandhi. और किसी को भी देखना हो तो आप प्रवीण जादव जी या राहुल राज जी के इन टच में आ सकते हैं, वो आपके लिए कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप कैसे देख सकते हैं इसको। Sure. Thank you so much, Mr. Tabas. And with this, we bring this to a conclusion. And I would like to invite Professor Ashok Rustagi, Principal of KPG College, Kasganj, and President of Organizing Committee, to give a vote of thanks. थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे के पावन अवसर पर यहाँ पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस and best wishes to all of you for participating in this most important webinar organized by KAPG College, Kasganj. Definitely, this type of occasion are very useful and important in our life. I especially convey my vote of thanks to all of you, especially Mr. Praveen Dhavas ji, film अभिनेता, श्रीमती प्रीति झंगियानी, प्रोफेसर राजीव चौधरी, डॉक्टर अजय धनखड़, राहुल राज जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जादौन, and all of you. I express my gratitude to all of learned scholars and speakers for the valuable ideas presented in this webinar. निश्चय ही जो योग है वो एक विलक्षण जीवन पद्धति है। योग का इतिहास जितना पुराना है, ओलंपिक का इतिहास भी उतना ही पुराना है। प्राचीन यूनान में हम देखते हैं कि मैराथन दौड़ और प्राचीन भारत में किस प्रकार से अखाड़े होते थे, खेल का कितना महत्व था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज डिफरेंट एंगल से, बहुत सारे आयामों से हमने प्रो पंजा लीग के विषय में, ओलंपिक के संबंध में, ओलंपिक के इतिहास को लेकर के, योग को लेकर के, योग के विभिन्न आयामों को लेकर के
और जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे के कॉन्टेस्ट में यहाँ जो चर्चा की गई थी आज डिफरेंट इश्यूज पर, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बड़े ही उपयोगी और उपादेयी है। मैं पुनः आज के इस शुभ अवसर पर इस वेबिनार में सहभागिता करने वाले सभी विद्वान वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। डेफिनेटली सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही हमारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सभी आयामों से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा इशू रहा आज का, और इस पर सारगर्भित पेपर्स यहाँ प्रस्तुत किए गए। बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये सेमिनार आयोजित की गई। मैं लगातार यात्रा में था पिछले 5 घंटे से। मैं बहुत ध्यानपूर्वक एक एक वक्ता को मैंने यहाँ सुना है। आई अगेन कन्वे माई गुड विशेज और मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और ये आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी के बहुत ही विद्वतापूर्ण यहाँ विचार प्रस्तुत किए गए। निश्चय ही ये बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत उपादेयी हैं और बहुत सार्थक हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जादौन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत के विभिन्न प्रदेशों से और देश के साथ ही अन्य देशों से इसमें सहभागिता की है। सभी बधाई के, आभार के पात्र हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। वास्तव में ऐसी जो रचनात्मक गतिविधियां हैं, जो सृजनात्मक गतिविधियां हैं, वो एक समाज को, राष्ट्र को, इंटेलेक्चुअल्स को, सभी को एक महत्वपूर्ण दिशा देती हैं। बहुत बहुत बधाई अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच। I would like to thank all the speakers again, Dr. Rahul Raj, Dr. Ajay Dhankar, Dr. Rajiv Chaudhary, Dr. P. Rajnikant, Lakshman Singh Bhandari, Secretary, PFI, Preeti Jangyani, President of People's Arm Wrestling Federation India, Praveen Dabas, Director of PANJA. And to the organizers, I would also like to thank the organizers, Professor Ashok Rastigi, Principal of K College, Kasganj, Dr. Praveen Singh Jadhawan, Organizing Secretary, Dr. Bhavna Timil, HOD, Department of Physical Education and Sports, SSJ, NPG College, Kasganj, and convener. And I would like to thank our technical committee, Mohitansh, Akshansh, Abhay, and Madhur. With this, we bring this webinar Unleashing the Inner Strength, Exploring the Synergy of Arm Wrestling, Yoga, and the Olympic Spirit to conclude, with good wishes to the speakers and the participants for their future endeavors, hoping that this session allowed them to explore the technicalities and psychology of arm wrestling, yoga, and honing the Olympic spirit. We wish the best for your future. Thank you all.